Hi everyone, myself Bhavesh Thakarel and welcome to another episode of Stories with Bhavesh Thakarel. But before I start this episode, I want to inform you this video is specially for you. If you are working somewhere, if you are doing a job or a business, if you are a part-time artist or a full-time artist, if you are totally new to this world and want to get into theatre, filmmaking, performance, if you're a writer, storyteller, anything, this video is specially for you. और ऐसा मत समझना कि सिर्फ जो आगे इसमें एक्सपीरियंस है उनके लिए है, बिगनर्स के लिए भी है. यहाँ पे जो बात शेयर करने वाले हैं वो है अप्सरा आयंगर जी. वो अपलॉज वडोदरा ग्रुप चलाते हैं एंड आई एम सेइंग जी बिकॉज शी सक्सेसफुली कंप्लीटेड 8 लॉन्ग ईयर्स. और ये बहुत सारी बातें हैं, फटाफट मैं पहले वीडियो शुरू कर दूंगा, लेकिन उसके पहले बता दूं, अगर आप या आपके दोस्त या आपकी फैमिली में से कोई इस सब्जेक्ट के थ्रू थोड़ा रिलेट करता है, थोड़ा कुछ लिख लेता है, कुछ परफॉर्म कर लेता है, अब उसको आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, ये वीडियो उन सभी के लिए. अगर आपके अंदर छोटा बच्चा वो छुपा हुआ है जिसको आर्ट बहुत पसंद है, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू. और अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आता है, देन भावेश ठाकरेल एंड दिस चैनल इज ओपन फॉर यू. यू कैन शेयर योर स्टोरी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. आई विल आस्क द क्वेश्चंस, यू शेयर द स्टोरी. बिफोर दैट लेट्स क्विकली मूव टू द वीडियो. थैंक यू सो मच. Hello, hi, welcome to another episode of Stories with Bhavesh Thakarel. But I think कि थोड़ी कोई जगह खोलनी पड़ेगी, वो दरवाज़ा खोल दे क्योंकि वो एको आ रहा है. अच्छा. हेलो 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 हेलो. पर यहाँ पे तो कुछ भी शोर आएगा. शोर आ जाएगा, वो दरवाज़ा भी खोल सकते हैं. चोर नहीं आएगा ना. चोर आएगा चलेगा, शोर नहीं आना चाहिए. Isn't that the deal? इतना ठीक है ना, चलेगा. It's fine. Fine. But can't you hear that music that's playing outside? बाजू के घर में शोर शराबा. But I think आपके पास तो माइक है ना, तो आपका वॉइस का प्रॉब्लम नहीं आएगा. और मेरे को तो सवाल ही पूछने हैं. Okay. ठीक है. Done. चलो. All set, good. Done. Ready to go? 3, 2, 1, action. Hello, hi, welcome to another episode of Stories with Bhavesh Thakarel. लेकिन आज मेरे पास स्टोरी नहीं है बताने को, बट एक बहुत बड़ी कहानी है आप लोगों को सुनाने को. और ये कहानी जो सुनाने वाला है वो है अपलॉज वडोदरा जिसने शुरू किया था, अप्सरा आयंगर. प्लीज पुट योर राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अप्सरा. Thank you. Thank you for having me here. Thank you for having me here, Bhavesh. Thank you so much. So Apsara, Applause Vadodara is going to complete 8 long years. How are you feeling? I feel like Applause has its own life. तो कभी कभी जब मैं शुरू करती थी तो बहुत सारे डिसीजंस के लिए मुझे ऐसा लगता था कि I have to think how will I do this or how will I do that. Now I think that Applause has its own life and I'm like this trustee who's like taking care. So I feel good. I feel like Applause has grown up. I feel like a parent also sometimes. I actually feel like a parent and I actually treat everyone at Applause like a kid. Age no bar ऐसा. But yeah, I feel good. I think I mean Applause का एक description है that age no bar, gender no bar. Age no bar, gender no bar, language no bar. Basically that no bar signifies inclusivity. So basically हमारा जो प्लेटफॉर्म है इट्स एन इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म जिसमें आप कहीं से भी आते हो, कुछ भी करते हो, कोई भी आपका बैकग्राउंड हो, आप स्टूडेंट हो, आप सीनियर सिटीजन हो, आप पेरेंट हो, आप सिंगल हो, आप जैसे भी हो आप आ सकते हो. यू कैन बी पार्ट ऑफ थिएटर. एंड एक्चुअली हमने ये जब शुरू किया था तभी बहुत सोच के हमने सोचा था कि व्हाट डू वी रियली स्टैंड फॉर. एंड वी रियलाइज दैट ये जो एक चीज़ है ये हम सबसे रेजोनेट करता है. दैट वी वांटेड टू स्टार्ट समथिंग दैट इज़ इंक्लूसिव and we wanted to make the world a better place with art engagement, with theatre engagement. So हम चाहते थे कि हम we get everyone to do theatre and become happy. Acting and theatre, I mean, is acting only thing associated with theatre? Like I think everyone, like even myself also, before I came into this theatre world, I had this information like अगर मुझे acting करना है तो मुझे theatre करना पड़ेगा कुछ सीखने के लिए. So is it limited to just acting or it is much beyond than that? Yeah, so actually theatre is much more than acting. ये तुमको भी पता है. अच्छा मुझे ये बताओ, I'm going to ask you. No, I'm going to ask you something, Bhavesh, कि तुमको ये पहले से पता था कि तुमने ये डिस्कवर किया कि theatre is much more than acting?
एज आई सेड, मेरे दिमाग में बस इतना ही था कि मुझे करनी थी एक्टिंग. आई मीन आई वाज ऑल, मैं बचपन से बॉलीवुड का बहुत बड़ा फ़ैन था, तो मुझे बस इतना पता था कि मुझे एक्टिंग करनी है. तो मुझे और कुछ सोर्स मिला नहीं. मैं घर पे कैसे बोलूँ ये मुझे पता नहीं चला. और मेरा फ्रेंड एक बार मुझे ले गया था, वो तबला सीखता था परफॉर्मिंग आर्ट्स में, तो वो मुझे एक बार ले गया था ऐसे ही कि उसकी एग्ज़ाम थी तो हेल्प मतलब सपोर्ट करने चल. तो वहाँ मैंने डिस्कवर किया कि वहाँ पे एक थिएटर डिपार्टमेंट है. और फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं वहाँ पे जाके पूछता हूँ. फिर पता चला वहाँ पे डिप्लोमा कोर्स है. फिर मैंने वहाँ से डिप्लोमा कोर्स शुरू किया. एंड दैट्स हाउ आई केम इनटू दिस वर्ल्ड. सो द सेम थिंग हैपेंड विथ मी. मैं जब बहुत छोटी थी तो मुझे एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता था. तो मैंने एक्टिंग कर करके मेरी सिस्टर को बहुत डराया है, जैसे तुम भी डराते होगे शायद. तो आई used to like run into the room and then just fall down ऐसे बेहोश. एंड शील बी लाइक कि ओ माय गॉड व्हाट्स हैपेंड. एंड लाइक इतनी बार मैंने उसको रुलाया ऐसे सब अलग अलग तरीके से. ऐसे मैं करती थी बचपन में. तो मुझे भी ये चीज़ था कि आई वांट टू बी एन एक्टर. मतलब मैंने बहुत बार मैंने सोचा यार थोड़े बड़े होते होते ये चला जाएगा, पर वो गया नहीं. सो दैट एक्टिंग का थिंग वाज ऑलवेज देयर. फिर एक पॉइंट पे मैंने बताया कि मुझे करना है, बट देन आई न्यू दैट माई मिशन इज़ नॉट ओनली टू बी एन एक्ट्रेस. कहीं ना कहीं मेरे हार्ट में पता था मुझे, पर मुझे पता था कि देयर वाज समथिंग अबाउट एक्टिंग दैट डिड अट्रैक्ट मी एज अ चाइल्ड. सो देन आई लिसन टू माई पेरेंट्स ऑफ कोर्स एंड आई स्टडीड साइंस टिल 12th. फिर उसके बाद ऐसे अब मुझे जो करना है करने दो. जिससे बस बेटा BSc कर लो, उसके बाद जो करना है कर लो. फिर वो किया था सर यार MBA कर लो, फिर जो करना है कर लो. दो MBA तक मैं पहुंची नहीं, बट आई वाज प्रिपेयरिंग. देन आई स्टार्टेड डूइंग अ जॉब. देन आई वाज लाइक फिर जो करना है कर लो. सो दिस जो करना है कर लो केप्ट ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन. एंड देन आई सेड दैट दिस कांट हैपन यार. मेरा एक था, मैं अपनी मॉम को बोलती थी ऐसा, मॉम सिस्टर सबको बोलती थी कि अनलेस आई गो ऑन स्टेज वंस आई कैन नॉट डाई. इतना अंदर से मेरे को फीलिंग होता था कि मेरे को स्टेज पे एक बार तो जाना ही है. Unless I go on stage once I cannot die. मतलब मुझे जीना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे एक बार स्टेज पे जाना है. दैट इज़ द इतना स्ट्रॉन्ग कॉलिंग था कि मुझे ऐसा लगता था कि आई कांट डाई. लाइक कोई भी सिचुएशन हो, एक्सीडेंट हो रास्ते पे या अर्थक्वेक आ जाए, रायट्स हो जाए, जो भी हुआ है, जो हमने एक्सपीरियंस किया, बट आई वाज लाइक आई कांट डाई बिकॉज मुझे एक बार तो स्टेज पे जाना है. ये लाइफ का एक वो है पर्पस ऑफ माई लाइफ ऐसा. तो ये मुझे पता था. सो दिस क्वेश्चन वाज इन माई माइंड, दिस थिंग वाज इन माई माइंड कि दैट इफ आई डोंट गो ऑन स्टेज आई विल नॉट बी एबल टू डाई. ऐसा मुझे जीना, मैं 60 ईयर्स पे तो 60 ईयर्स पे मुझे स्टेज पे तो जाना है, ऐसा था मुझे. एंड देन दिस हैपेंड इन माई लाइफ एग्जैक्टली 10 years ago in 2012. and I got an opportunity. Like I used to, मैं बहुत सारे डायरेक्टर्स को ऐसे बोलती थी जब भी कोई प्ले देखने जाते थे, किसी को भी मिलती थी, ऐसे भी लाइक सर चांस होगा तो बताना, अपॉर्चुनिटी होगा तो बताना. ऐसे कर करके आई गॉट अ चांस इन अ प्ले. एंड देन आफ्टर दैट माई फैमिली से चल अब तो हो गया तेरा, अब छोड़ दे, अब हो गया ना, अब जॉब कर लो, पढ़ाई कर लो, जो करना है कर लो, ऐसे डू समथिंग, गो हियर गो देयर एट्सेट्रा एट्सेट्रा. हो गया, छोड़ दे, अभी मना कर दे. पर वो मना नहीं हुआ. आई couldn't like say no. And then I started working with this theatre group for some time, did couple of shows, even got nominated as an actor and all of that. And then I realized कि so you can't be cast into every play. Opportunities के लिए हम कितना वेट करेंगे. And then I felt कि ठीक है, मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो मुझे करनी है, बट दिस इज़ समथिंग जो मैं नहीं करूँ तो मुझे नहीं चलेगा. And so I said that opportunities have to be created. And so I found like-minded people. I said, let's start कुछ करते हैं type thing. And that's how Applause started. And once Applause started, I realized that theatre is much more than performance, much more than acting, much more than just a show. I realized that theatre brings people together. The conversations, the laughter. कभी कभी हम अप्लॉज में मिलते हैं, हंसते रहते हैं पूरा दिन. और फिर मैं सोचती हूँ तो ऐसा तो क्या ही हम बात करते हैं कि इतना हंसने की ज़रूरत है. घर जाके तो याद भी नहीं रहता है. बट आई जस्ट cherish the way joy and happiness comes into people's life when they join with theatre. And over the years, like thousands of people have been a part of Applause. मैं सच कह रही हूँ. like 2014 से 2022 तक ऐसे जनरली बोलते हैं डिकेड इज़ लाइक स्पेशल, पर मुझे सच्ची ऐसा लगता है कि 8 ईयर की जर्नी में हमने हज़ारों लोगों की लाइफ को ऐसे टच किया है. और मुझे बहुत अच्छा लगता है सोच के कि आई हैव बीन एबल टू फैसिलिटेट दैट जर्नी. मुझे लगता है कि सबकी ही डेस्टिनी है.
राइट. सो दैट इज़ वन थिंग. एंड इसकी वजह से हमने एक वर्कशॉप शुरू किया था 2019 में. ऐसे ही बैठ के शुरू किया था कि लेट्स डू समथिंग वेयर पीपल कैन कम एंड लोगों को ऐसा ना लगे कि थिएटर करने के लिए बहुत पैसे देने पड़ते हैं, बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं सीखने के लिए, बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं हो तो हम कुछ सीख नहीं सकते, कर नहीं सकते. एंड एक्टिंग इज समथिंग अगेन, इफ़ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल यू हैव टू कीप working on your skill. You know, you can't simply say I'm an actor and then wait for a job or wait for a role for like 6 months, 1 year. तुम अपनी स्किल को अप्लाई नहीं करोगे तो तुम नहीं सीखोगे. And for common man who has dreamt of being an actor, you know, to create that memory, to have that experience, तो वो नहीं होता है घर पे बैठे बैठे. तो हमने सोचा कि let's do something called you know, some 1 hour workshop जहाँ पे सब आ सकते हैं. And the first time we did that workshop, we kept it free, and we had like 30 people in this small room. And then we were like, this is something, and let's do it again. And then we decided we do it every Friday. And this is called New Theatre Rules, which is like theatre experiments. तो हम theatre के concepts लेते हैं, खुद भी सीखते हैं, लोगों को भी सिखाते हैं, try भी करते हैं, देखते हैं कि कुछ इसमें से अच्छा निकला या नहीं. और इसको फिर मैं हर सेशन में मैं एनकरेज करती हूँ लोगों को कि अपने लाइफ में लेके जाओ इसको. इमोशंस को कैसे समझते हैं, लोगों से कैसे बात करते हैं, दोस्तों को कैसे समझते हैं, फैमिली के साथ रिलेशन कैसे बेटर करते हैं, ऑफिस में अपना कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रॉन्ग रखते हो, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हो, सेल्स कैसे करते हो, मार्केटिंग कैसे करते हो. तो मैं हर बार बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हु कम टू दीज न्यू थिएटर रूल सेशंस आर पीपल फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, राइट. एंड दे पीपल जिनका सपना रहा है कि वो थिएटर करे या एक्टिंग करे पर नहीं कर पाए, एंड दे वांट, वो जुड़े रहना चाहते हैं. तो इसीलिए मैं हर बार ट्राई करती हूँ कि हमारे जो सेशंस है वो ऐसे हो जो तुम अपने लाइफ में लेके जा सको. एंड इसके वजह से भी ऐसा हुआ है. बहुत सारी स्टोरीज़ हैं भावेश, बहुत सारी स्टोरीज़ कि लोगों ने वो देख के रखते हैं, वो सोचते हैं यार एक बार तो करना है. पीपल जिन्होंने कभी थिएटर के बारे में नहीं सोचा है वो सोचते हैं यार एक बार तो करना चाहिए यार. एंड दे कम एंड जॉइन थिएटर. दैट इज़ आवर विक्ट्री. That is the audience that we're creating. That is the difference that we're making in the world, isn't it? तो ये चीज़ जो है has been something that has stayed, and it was not easy कि 3 years हम continuously every Friday करें. पर हमने every Friday किया है. And families come, Bhavesh, like mom and child, father and son, grandparent and grandchild, you know, children, siblings. So it's become like a thing where, you know, people find joy. And the kind of stories, you know, people say कि it's a great way to start the weekend. मतलब ऑफिस का काम खत्म करके फ्राइडे को आते हो, वीकेंड शुरू करते हो, जोन आउट होते हो, अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हो. तो people come here, they become happy, they become energized. But I think I had this question from a very long time that, you know, theatre is all about performance. It's about performing live, performing in front of a large amount of audience. So whether it's small amount of audience, but performing live is Correct. a big thing. Correct. You know, something is happening right in front of us. It's the magic which is being created by directors and actors and all the performers. But I think how did you face this pandemic, because everything was moving offline. Correct. Like so online, this is interesting. तो जब pandemic हुआ, पहले तो हम denial में थे. Okay, we were in denial, and we were like, okay, 1 week का break है, ठीक है, देख लेंगे. In fact, March 24th को हुआ था lockdown, and March 27 is World Theatre Day. तो हमारा तो फुल फ्लेजेड प्ले का रिहर्सल चल रहा था, ऑडिटोरियम्स बुक थे, लोगों को बुलाया हुआ था, ऐसे डिसाइड किया हुआ था कि हम करेंगे. तो हम लोग सब वो मूड में थे कि नहीं यार, नहीं कुछ नहीं, कर लेंगे. हमने कैंसिल ही नहीं किया शो को. सो व्हेन इट हिट अस वी वर लाइक 1 week maybe, 10 days, 15 days, 1 month maybe. And after 1 month I was like, this is not normal. This cannot go on, because रेंट तो आपको फिर भी भरना है, खर्चे तो आपके फिर भी हैं. तो हमारे शोज कैंसिल हो गए, हमारा काम बंद हो गया. एंड वी वर लाइक, नाउ व्हाट डू वी डू? दिस इज़ लाइक अ डेड एंड. एंड सच बोलूँ तो इसके पहले यूट्यूब पे कुछ नहीं था अपलॉज का. एक ही वीडियो था अबाउट अपलॉज, एंड आई डिडंट बिलीव इन डिजिटल एट ऑल. मुझे लगता है यार डिजिटल इज़ नॉट थिएटर, मैं यही करूँगी, मैं सिर्फ थिएटर करूँगी, ग्रास रूट लेवल पे काम करूँगी, फिर जो होगा वो होगा. आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग डिजिटल. But once this happened, I really started to reflect. I really, you know, thought about it, prayed about it, tried to understand that, you know, what is it that I'm supposed to learn from here? What am I supposed to take back? And then I realized that theatre is really about people, and it's about connecting people.
And I was like, I have to find a way. And theatre adds life, right? It adds value, it gives energy. And this is a time when people are really not doing well emotionally, also, financially also. So I knew that I had to create value. And I was like, we have to create value. We have to find a way. And at that point, we realized that children were probably suffering the most because they didn't understand what was happening. Suddenly, the school is shut. They can't meet their friends. वो बाहर नहीं जा सकते. पेरेंट्स के साथ ही होते हैं. पेरेंट्स भी थोड़े थोड़े क्रैंकी हो रहे थे. पेरेंट्स कितना संभालेंगे, कितना कर पाएंगे. So everybody was going through a rough phase, and we thought, let's try to do like one workshop and see maybe. So the first workshop I did in the lockdown was like a 3-day workshop for children. And it was like, it really did well. Like, so for the first time I downloaded Zoom app. I thought, let me try kaise hota hai, let me buy a subscription. I was like, I don't even want to buy a subscription. I was like, just not up for it. But once we did it, and I was like, okay, this makes sense. And then I realized कि जहाँ लोग मिलते हैं वहाँ थिएटर होता है. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि पेंडेमिक में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि स्क्रीन पे भी अगर लोग मिल रहे हैं और एक दूसरे से अगर बात कर रहे हैं, एक दूसरे की एनर्जी को जितना भी ले सकते हैं, वो लेके जितना भी आप कर सकते हो, तो अगर ये कर रहे हैं तो दैट मीन्स यहाँ पे थिएटर है. और फिर मैंने सारे थिएटर के एक्सरसाइजेस, वर्कशॉप्स, गेम्स सब निकाले, उनको रखा सामने. मैंने बोला, हाउ कैन आई पुट दिस इनटू अ वर्चुअल experience. So we devised ways to play games, to play theatre games, voice modulation, walk space, speed, then all these things, playing with a ball, with the imaginary world, playing with energy, playing with voices. तो ये सब हमने किया फिर. And then I started to go beyond Vadodara as well. We started programs where people could join us from different parts of the country, then different parts of the world. I also collaborated with people in London and then people from Nigeria. And I was like, okay, so कुछ meaningful यहाँ पे हो रहा है. And but then again the pandemic did sort of come to an end, नहीं कह सकते, but एक sort of equilibrium plateau जैसे आ गया and लोग अपने अपने life में वापस जाने लगे. तब my heart started to race. I was like, I've forgotten everything. मुझे तो याद ही नहीं है, मैं कैसे करूँगी, मुझे कुछ नहीं. I was feeling like I don't know anything. Like इतने सालों का experience सब चला गया, ऐसा feel हो रहा था. फिर मैंने कहा कि यार, let's go back and let's start one day at a time. So then हमने फिर जुलाई में थोड़ा थोड़ा शुरू किया in 2020. And I think it was 2020 July. Yeah, we started in 2020 July थोड़ा थोड़ा. And then वापस बंद किया शुरू किया. That went on in 2020. In 2021, we started some workshops physically, but I continued my online workshops. So they continued online workshops, online events, online shows as well. And then we started working with the government. We did this LIC show in like last year हमने किया, फिर उसके बाद इस साल भी किया. तो उसमें मज़ा आया. फिर थोड़ी physical shows commissioned होने लगे. And then we started to continue both. So at this point of time in Applause, we have online programs as well. We have physical as well. और मैं ऑनलाइन में एक और चीज़ बताना चाहती थी कि जो तुमने कहा ना कि लाइव होता है थिएटर, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वर्चुअल में भी लाइव ही कर रहे हैं. इट्स नॉट रिकॉर्डेड. So we used to stream the shows live, and we used to tell the kids also that please, kids or I call everyone kids, but basically we used to tell the participants also that this is live. तो ऐसे करके हमने live performances किए हैं from their own spaces. So the pandemic really taught us कि think on your feet, like you can't be in a comfort zone, and that is what I learned. That was something I learned. I think talking about comfort zone and to create a comfort zone, I think if I talk about any other profession out there apart from theatre, I think to make a comfort you want some finances. And being a theatre actor and you being successfully running a theatre group from last 8 years can answer this better, that if anyone wants to join theatre or who wants to part of this creative world, how can someone think about finances for their futures? Because Applause we like जब हमारी home productions होते हैं उसमें we
we bear the cost of everything. So what we do is we train the actors. Like most of the people are newcomers, or they want to experience theatre, or they want to get a platform. They want to document their experiences. Like if you are applying for college or applying to places, you also need to show that you've worked in a certain number of productions, and every production has a cost. So the first whenever we do a home production, Applause ka, the first show, it is difficult to compensate the actors, because we also generally don't we generally have to really work on a very tight budget, because we want to schedule more shows and things like that. So that first show that we do, उसमें हम लोग ट्रेन करते हैं एक्टर्स को, पूरा डेवलप करते हैं प्रोडक्शन को, और वो पहले शो में हम शायद कभी कभी नहीं कॉम्पनसेट करते एक्टर्स पर, बट फ्रॉम द सेकेंड शो इटसेल्फ वी डू पे एक्टर्स. एंड वेन एवर वी डू अ कमीशन शो, लाइक अ कमीशन शो, जैसे कि अगर कोई कॉरपोरेट ने या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, या फिर जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट ने कोई किया है प्रोजेक्ट, हमारे साथ कुछ कोलैबोरेशन हुआ है, तो वी ऑलवेज पे द एक्टर्स. सो दैट वाज समथिंग यू आस्क्ड अबाउट हाउ कैन थिएटर पीपल मेक मनी. व्हाट द वे आई वुड लुक एट इट इज़ दैट लाइक कोई भी इंडस्ट्री अगर आप लेते हो, जैसे कि मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिकल फ्रेटर्निटी ले लो, हॉस्पिटल्स, तो उसमें सिर्फ डॉक्टर होते हैं क्या? नर्सेज भी होते हैं, फिर रिसेप्शन पे भी कोई होता है, कोई मैनेजमेंट भी करता है, कोई अकाउंट्स भी करता है, राइट? नर्सेज भी होते हैं, फिर सिक्योरिटी में भी कोई होता है. तो वो एक चीज़ है. फिर अगर उस इंडस्ट्री में अगर आप जाओ तो फार्मास्यूटिकल भी होता है, कोई दवाइयाँ भी बनाता है, लैब्स भी होती हैं, रिसर्च भी होता है. तो द इंडस्ट्री इज़ वेरी बिग. सो द प्रॉब्लम कम्स व्हेन वी थिंक कि मुझे एक्टर बनना है और मुझे सिर्फ एक्टर बनना है. तो मुझे ये लगता है कि एक्टर्स आर वेरी क्रिएटिव पीपल, वेरी टैलेंटेड पीपल, वेरी वर्सेटाइल पीपल. तुम बहुत वर्सेटाइल इंसान हो, तुम में कैपेबिलिटी है, तुम अपने आप को मोल्ड कर सकते हो, तुम दूसरों की बातें सुन सकते हो. तो एक चीज़ होता है फेम, जो सबको चाहिए होता है, जो विच वॉज नॉट माई डील. But I do know that a lot of young people who want to get into theatre or acting, they want to become famous, or they want to get like publicity, and all of these, if you see nowadays Instagram है या फिर Facebook है, like everybody is their own celebrity, you know, सबका खुद का एक वो है रुतबा या whatever you call it. So I know that fame is one thing, but I would say that just don't chase after fame, like don't go. But I don't know if that's a good advice, because I have been like that, and maybe it's not good advice, but my deal is that not just fame. Like my thing is that do good work. Like I would say that pursue your dreams. I would say that learn multiple things. I would say कि तुम एक्टर हो, तुम एडिटिंग भी सीख लो, वीडियोग्राफी भी सीख लो, फोटोग्राफी सीख लो, थोड़ा डिज़ाइनिंग भी सीख लो, प्रोडक्शन में असिस्ट करो, डायरेक्शन करो, राइटिंग का ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, अपने आप को अपग्रेड करते रहो. एंड द थिंग इज़ आई फील कि फेम, दूसरा एक बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट है मेरा, तो मुझे ऐसा लगता है कि फेम इज़ लोकल. हमारी दुनिया जितनी बड़ी है उतना ही हमारा फेम होता है. सो आई फील दैट जैसे कि हम कुछ सक्सेसफुल करते हैं, जैसे कोई वेब सीरीज़ में आ गए, कोई मूवी में आ गए, कोई मूवी में काम कर लिया, तो देन आवर सर्कल ऑफ पीपल स्टार्ट सेइंग दैट यू नो वाह गुड जॉब. एंड एक्चुअली वी केयर अबाउट दैट, राइट? लाइक वी केयर लाइक व्हाट इज़ आवर फैमिली एंड व्हाट डू आवर पीपल फील अबाउट अस. लाइक ठीक है, अगर 10,000 लोग मुझे जानते हैं, 50,000 लोग जानते हैं, पूरी दुनिया मुझे जानती है, ठीक है, आई बी हैप्पी. बट ultimately, like my friends, my family, what they feel about my life, and that is what will get a balance. So we should be happy. Try your hands at different thing. It's totally cool. तो ये मुझे लगता है. और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब do you want to know like how I started, like the journey of that, like how I managed money? No, well, if you can answer, it's like cherry on the cake. But yeah, that was like basically the question was like if someone is thinking about getting into theatre, and so like the whole and sole reason why families usually say no is for the financial term. Yeah. So I just wanted that you to throw light on that. But if you want to share your something. But did this help? Did this answer your question? Like if you feel that the answer did not, if you feel that that you didn't get the answer, then
No. I think I am actually doing the same thing. I was actually just an actor a few years back, but eventually because of pandemic, I learned video editing, I learned writing, now I have a YouTube channel on which I share stories. It's very difficult to create a content, write something, shoot something, edit something, and you don't know whether it's going to work or not. And having said that, to create a financial thing into it, if I would have been limited to just acting, I think मैं अभी बहुत पीछे होता. Because I started learning new things, I have a lot more opportunities in front of me to do and add value in someone's life, and in fact add value in my life also. And I think theatre helps you to understand there are other possibilities also where you can put your knowledge into. Absolutely. और मुझे लगता है कि the world is changing now, so because ये digital इतना है, digital world जो बन रहा है, I think everyone can like record, like make, if you have a short film idea, you have a web series idea, you can do it on a small budget. Another thing you can do is you can find sponsors, start with small projects, approach small businesses. So मैं अपना थोड़ा background बताती हूँ work wise. So I have been a marketing professional for like 10 years. I have my own marketing consultancy, you can say. We used to be like a full-fledged, like बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं type company जो clients के साथ ऐसे बहुत सारा मतलब we had like a lot of clients and we were like constantly doing the proper typical client servicing work and stuff like that बहुत सालों तक. फिर एक पॉइंट पे मैंने पिछले 3 साल में ज़्यादा शिफ्ट किया है. ओवर द लास्ट 2 years आई कैन से 2020 से पेंडेमिक से शायद मेरा ज़्यादा इंक्लिनेशन रहा है टुवर्ड्स थिएटर. वी स्टिल डू मार्केटिंग वर्क बट द फॉर्मेट इज़ डिफरेंट. लाइक आई वर्क विथ क्लाइंट्स टू बिल्ड अप देयर social media presence, to develop their voice, to create some value, to sponsor some of our events. So I started off as a marketing person. So everything that you see here has a sponsor. Like we've always had sponsors. Collaboration is again something like if you're doing theatre, collaborate. So this is like business mantra or whatever you call it, like gyan from your own life. I'm like giving away free gyan कि आप लोग भी करो, but basically collaboration helps. And एक और ये drawback होता है artist का या actor का काफ़ी बार कि हम इनसिक्योर हो जाते हैं. हमें लगता है कि ये चीज़ मैंने किसी को बोल दिया तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ किसी को बोल दिया तो. आई हैव बीन टू थिएटर स्कूल्स एज वेल, आई हैव बीन अमंग्स थिएटर पीपल. सो मेनी टाइम्स एक्टर्स फील दैट जैसे कास्टिंग का भी होता है, एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है. तो आपको जैसे कास्टिंग का पता चलता है आप नहीं बताओगे किसी को, यू बी लाइक अरे मुझे नहीं बताना, मेरा अपॉर्चुनिटी चला जाएगा. तो वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट. इनसिक्योरिटी इज द डील. Like if you want to make, if you want to be successful as a theatre maker, creator, collaborate, join hands with people. And it's ये मैं हर टाइम बोलती हूँ कि इंडस्ट्री तो छोटा सा ही है. थिएटर कितना है, मेडिकल फ्रेटर्निटी, इंजीनियरिंग कम्युनिटी, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स जैसा तो नहीं है, इतना सा तो है ना. तो लेट्स जस्ट होल्ड हैंड्स एंड बी गुड and be supportive to each other. I want number of plays Applause has done. See, you can see Listen, 1, 2, 3. This was my first, मतलब हमारा, I don't know what has happened to me, मैं माई बोल रही हूँ. I think वो बुढ़ापे का असर है कि I'm going माई because हम हमेशा हार्स करते थे. और अब मुझे लगता है कि I've really grown old and I go like मेरे बच्चे, मेरा ग्रुप, मेरे लोग, अलविदा, that kind of a thing. So this is 3. No Valid Reason, one of our favorites, like it's about a radio station. Then 3 Shades, 5. Cake Story 6, that traveled the whole country. फिर after that we had Speechless, which is 7. Then we had Half Glass Full, which is 8. Which we then had 8 तो ये हुए. और हमारा सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन था जो अभी लॉकडाउन के बाद हुआ, जो एकदम इतना enjoyable था. We had like 30 people and people enjoyed the production very much. It was called अगर मगर लेकिन. तो ये 9 है, शायद और भी हैं पर मुझे अभी छोटे बहुत सारे होंगे. वर्कशॉप्स बहुत सारे हैं. स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल है. या पेपर पोएट्स. ओके. सो बैक इन 2014 जब हमको ये सब प्रोडक्शंस करने में बहुत मज़ा आ रहा था, तो हमको रियलाइज़ हुआ यार एक प्रोडक्शन में तो बहुत खर्चा होता है, तो हम कैसे मैनेज करेंगे. तो हमने सोचा कि तो भी वी नीड टू बिल्ड, कीप आवर ऑडियंस टुगेदर एंड वी नीड टू डू समथिंग फॉर द city and let's just start this. So paper poets is something.
फॉर क्लोजेट पोएट्स, ऐसे हम लोग बोलते थे कि जो पोएम लिख के छुपा देते हैं, किसी को बोलते नहीं है. पर आजकल तो ऐसा होता नहीं है. आजकल एवरीबडी वांट्स टू लाइक परफॉर्म पोएट्री एंड देन बिकम फेमस एंड ऑल दैट. बट अगेन दैट्स a secondary matter. तो paper poets is something that where we say that come to listen, come to share. So जब paper poets के meetups होते हैं, तो if somebody says कि मुझे जाना है, तो can I share and go? We'll always be like no. You have to listen to others. Like listen ना, सुनो एक दूसरे की बातें. सिर्फ अपना बोलना ज़रूरी नहीं है. तुम बोलते हैं बैठो, सुनो, बातें करो, फिर जाओ. So paper poets is a meetup for poetry where we come to listen, come to share. The focus is not on performing, it's on sharing, it's on creating, it's on writing. It's about coming together as a community. We've been doing it since 2015, I think 7 years now. And बहुत सारे लोगों ने पेपर पोएट से भी जुड़े हैं, जिन्होंने लिखना शुरू किया पेपर पोएट्स की वजह से. फिर काफ़ी बार in 2017 we did a paper poets city-wide initiative for the full year. So from January to December, we covered every corner of Baroda. So Alkapuri, Sayajiganj, Vagodia, Varashya, Manjalpur, and then we went to the other side, Guthri, Tarsali. हमने हर एक कॉर्नर ऐसे मैप किया था और हमने 12 इवेंट अलग अलग जगह पे किए थे. एंड देन फाइनली हमने ईयर के एंड में एक परफॉर्मेंस किया था. So that was 2017. I think 2017 या 2018 में we had this Vad Fest also. Okay, हाँ. Even Applause was a big part of that. Yes. There were celebrities coming from industry, and I mean, you were the one who interviewed them, and so I think how was your experience? That was the starting point यार. वो तो अपना starting point था. 2015 था वो Vad Fest. Sorry, 2015. हाँ, and वो पता है कैसा था? 2014 में हमने ग्रुप शुरू किया. ये प्रोडक्शन में सब कुछ डाल दिया हमारा, मतलब मनी वनी टाइम वाइम सब मेरे हमारे फर्स्ट प्रोडक्शन में. तो उसके बाद बट इट वाज ऑब्वियसली यार फर्स्ट था और इतना भी अच्छा नहीं था, और फिर वो एक्सेप्ट करना कि नहीं था. टीम वाज वेरी हैप्पी, टीम वाज वेरी सैटिस्फाइड, बट वी कुड फील दैट ओके ऑडियंस वाज आल्सो हैप्पी, बट फ्रॉम द थिएटर पॉइंट ऑफ व्यू वी रियलाइज दैट इट वाज नॉट लाइक वेरी गुड, एंड सो इट वाज अ वेरी सैड फेज फॉर अस. And at that time we thought at that time we got approached to host this Vad Fest. So it was a total mood lifter, and that changed a lot for us. Like it inspired us to keep going. हम लोग ऐसे give up करके हम लोग ऐसे सोचने वाले छोड़ यार नहीं करना, ऐसा हो रहा था हमको. So it was like in November, December we feel like छोड़, and in January we got this opportunity, and then Vad Fest was really really amazing. One of our best memories. We met all of these wonderful creative directors and people. There is this special moment with Rajesh Mapuskar where my co-actor like Chitra and I were like doing the entry with Rajesh Mapuskar. It's a very cute picture जब हम लोग welcome कर रहे थे इनको, श्रीराम राघवन को कर रहे थे welcome. And we met Zoya Akhtar and Humi Adjanya, and then even आई थिंक इवन मकरन देशपांडे, इवन नंदिता दास, उन सबके ऑटोग्राफ्स हैं अंदर. तो हमने सबके साथ बहुत वैल्यूबल इंटरेक्शन किया, बातें की, थिएटर के बारे में इंस्पिरेशन लिया, फिर उसके भी वीडियोस बनाए, शेयर किया, एंड खुद को ऐसे इट वाज लाइक अ स्टार्टिंग, इट वाज लाइक अ रिवॉर्ड, इट वाज लाइक अ मोटिवेशन फॉर अस. इट्स इंटरेस्टिंग यू आस्क्ड, मैं तो भूल गई थी ये चीज़. नहीं, इंटरेस्टिंग से मतलब एक और चीज़ मुझे पता है. आई थिंक एंड हु इज अंडर 25 नोस थेस्पो फॉर श्योर. Oh yeah. It's like something everyone dreams about, and I was lucky enough that I was a part of the core team of Thespo for 2018, and I was in Mumbai for a month for that, and it was really good. Like the way they organize the things, the way they do their introduction, like how they are going to open for this year, and it was wonderful. The kind of energy they guys have, the kind of youth and everyone they join together, and throughout India, like pan India, they work on it. They regularly go for plays, they select one. So is there any way that Applause can do something like this, like not for like the limited up to Vadodara, but for everyone out there? Competition kind of a thing is going to happen in Applause. Like, do you have any plans for that? No. First, I must say that Thespo is the reason that Applause happened. Seriously? Yeah,
This was the reason that Applause became a group. Applause started as a page for updates of theatre that's happening in the city in 2012. Okay, तो 2 साल जो हम लोग थिएटर करते थे जिस थिएटर ग्रुप के साथ, हम उन्हीं के अपडेट्स डालते थे. हमारा खुद का एक ग्रुप बना 2014 में. दैट टाइम आई वाज अंडर 25 एंड आई गॉट अ मेल फ्रॉम थेस्पो बिकॉज हमारा पेज था, ये सब वो लोग ढूंढ रहे थे. And I got a mail from Thespo and they said that you do a show, like please apply, you're under 25, you're eligible. And for the first time in my life I thought, can I? ऐसा. And उस मोमेंट तक हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम खुद प्ले लिख सकते हैं या कर सकते हैं. And so Applause started because of Thespo, to be honest. And we were the first people to invite Thespo to Baroda city. We invited them to Baroda. We hosted them for 2 years, 3 years in Baroda, and then of course they made their own connections. And now Thespo comes to Baroda every year. But we were the organization that invited them, hosted them. They stayed with us, and all of that. So we did make that big contribution to Baroda somewhere. ऐसा. So वो चीज़ है. But when I come back to competition, I'm not much from the school of thought of competition, but we will think about it. See, so it is a platform. And it is built, it is moving forward by the people who join Applause, by the people who come to Applause. It's not Apsara Iyenger doing whatever she feels like. ऐसा नहीं है. अगर आप देखो तो बहुत हमारे हर साल का अगर आप जर्नी देखो, हर साल का अगर आप रिकैप देखो तो हर साल अलग है, you know. But there is consistency definitely, and I think that is what makes us unique, and that is what has made us stay for 8 years, reaching thousands and thousands of people, because we've been consistent. But at the same time, Applause is a platform and it is a voice for people of the city. So if somebody comes to me and says that, Apsara, let's do a competition, and if we can figure out how to execute this in a healthy way, if there's someone to take the initiative to lead this project, then I'm very happy to support it and to bring it to a culmination. But this is not my driving force. तो जैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेरी ड्राइविंग फोर्स है तो मैं वो खींच के आगे जा सकती हूँ. पर कंपटीशन जो है, मैं खुद नहीं बिलीव करती हूँ इतना कंपटीशन में. मुझे ऐसा लगता है कि इनफैक्ट व्हेन आई हैड बीन टू थिएटर स्कूल्स लाइक NSD एंड एवरीथिंग, मतलब ये चीज़ मेरे को बहुत स्ट्राइक हुई कि देयर इज टू मच ऑफ कंपटीशन, you know. And I feel that you have to compete in the outside world anyway. So right now let's like create or experience, or you know. So I didn't really see what is the like how capable is Applause to really host a competition or inspire people. But I like the idea, Bhavesh Thakarel, and I will think about it for sure. But thanks for putting the seed in my head. But yes, before we close this, I would like to ask this big question, that why the name Applause? Okay, yeah. Why Applause Vadodara? So I had started like social media work in 2012 and बहुत excitement था मुझे कि अच्छा पेज बनाते तो ये नेम चाहिए था, कुछ तो नेम बनाते हैं. तो my director, my mentor, he said, how's this name Applause? And I was like, it sounds nice. And then we went ahead and we put the name Applause, and we were like, let's make it Applause Vadodara. So we made the page Applause Vadodara so that people could get updates about theatre. And then in 2016, Applause got selected for one of the most unique theatre management programs. It's called SMART. It's called Strategic Management in the Art of Theatre, which was hosted by IFA, Bangalore and Junoon Theatre, and they selected like 16 groups from across India. And from the entire country, like more than 200 groups had applied, and somebody had tagged us on Facebook कि तुम भी apply कर दो, और हमने apply किया, and we went through a rigorous training to just simply apply. 16 pages का हमने application भरा था और उनको भेजा था. उसके बाद we got selected. उसके बाद we went into that, we were the only 16 groups we got selected. It was entirely sponsored program for 6 months. We had mentors, like my mentor was Sanjana Kapoor. She kind of mentored us and coached us, and she was with us for like 6 months. And even now, from time to time, when I get stuck, like I would be writing her a mail and, you know, getting advice. So we were mentored in this entire process, and that's when they urged us to really think about where do we want to go, who are we, what do we want, what is our mission. And so they
pushed us, they coached us to really discover like हम कौन है. और उस प्रोसेस में ये बहुत सवाल आया. हम मिलते थे, एवरी वीक ग्रुप मिलता था. सो द फर्स्ट थिंग दैट केम अप वाज आवर मिशन, you know, to create innovative theatre experiences. So we focused on theatre. So पहला हमारा मिशन आया कि to create innovative theatre experiences. So we understood then कि हम कौन सी चीज़ों को हाँ बोलेंगे, कौन सी चीज़ों को ना बोलेंगे, हमारे थिएटर ग्रुप का क्या आइडेंटिटी बनेगा, ये थोड़ा सा डिफाइन हुआ. फिर हमने सोचा कि हमारा विजन क्या है, हमें क्या लाना है. सो आवर विजन मिशन स्टार्टेड टू गेट स्ट्रक्चर्स एंड वी वर लाइक एज नो बार, जेंडर नो बार, लैंग्वेज नो बार, इंक्लूसिव थिएटर इनिशिएटिव that will engage, empower and entertain. So this became our mission and vision, and where do we want to go, and all that came up. So this became strong, and then we came to our name, and you know, our mentors and our coaches, they urged us that, you know, you can drop the word Vadodara and you can call yourself Applause. And we really brainstormed on this, that do we want to be known as Applause or do we want to be known as Applause Vadodara? Because अगर हम अहमदाबाद में परफॉर्म करते हैं, बॉम्बे में परफॉर्म करते हैं, दिल्ली में परफॉर्म, तो पीपल भी लाइक कि वडोदरा, तो एक एक्सेप्टेंस या यू नो रिसेप्शन शायद हमें ना मिले. पर बहुत डिस्कस करने के बाद हमने, इट जस्ट डिडंट फील राइट टू ड्रॉप द नेम वडोदरा. इट वाज लाइक एक सरनेम जैसा फील हो रहा था एंड एक आइडेंटिटी जैसा फील हो रहा था. जहाँ हम आइडेंटिटी, हमारा मिशन, विजन, सब कुछ ऐसे डिफाइन कर रहे थे, तो हमने कहा कि नहीं यार, वडोदरा नहीं ड्रॉप करेंगे. दिस इज़ from, and that's when, if you see our mission statement, it is like a Vadodara based initiative that has a global aspirations. So no matter where we go, our name remains Applause Vadodara, because we want to take the city along with us, and we wanted to make the contribution to the city. We wanted to bring recognition to the city. We wanted to you know, we are so rooted to our identity, and that's how Applause Vadodara नाम रहा. पहले था, पर हमने वो वडोदरा ड्रॉप नहीं किया. वी कंटिन्यू टू कीप इट. अभी भी जब हम कोई भी सिटी में परफॉर्म करते हैं, कोलैबोरेशंस होते हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी होते हैं, तो वहाँ पे नाम अप्लॉज वडोदरा होता है, तो सबको वडोदरा तो पता होगा ही. So now coming to the final question, is it limited to Applause Vadodara Theatre or it is going to expand? Bhavesh is going to answer that question. I don't know. Like देखो मैं it should at least go up through Applause Vadodara Theatre and films and entertainment. And Okay. entertainment. Okay. But I must say that we are doing a lot of things. A lot of opportunities have come. We are casting also. We don't have a separate name right now, but we are casting, and we've like given opportunities or created opportunities for like more than 100 actors in the last year, you know, paid opportunities for actors, right? Through the casting. Yeah, through casting projects. So I feel good that is happening. So we will define probably a casting wing. We will probably also venture into other productions, probably. There is a lot of scope to do theatre and more. वो तो हमारे नाम में था, Applause Vadodara Theatre and more. So शायद हम करेंगे. Yeah. But I just wish all the very best, that it should not be limited to theatre. Absolutely, but absolutely. It should grow bigger, stronger. Yeah. Or maybe theatre should not be limited to production. Theatre should be. Is anyway not limited. So it's not limited to theatre. Like, so theatre goes into production, theatre goes into film, theatre goes into advertising, theatre goes. So bringing the theatre element everywhere. Theatre element. So wish you all the very best for that. Thank you. And congratulations for to 8 long too. years and many years to come. Thank you so much for watching, and Thank please you. everyone to subscribe. Thank you everyone. Please subscribe to Stories Bhavesh's with Bhavesh Thakarel. Yes. Bhavesh's channel, Stories with Bhavesh Thakarel. And I hope want that to. you have seen Kali Pili. I loved it. Yes, you have. I love it. अरे बहुत ही अच्छी है. मैं तो सबको फॉरवर्ड किया, मैं सारे फ्रेंड्स को फॉरवर्ड किया. उसके बारे में मैं सोच भी रही थी. मैं ये एकदम मतलब एक वो ही हो गया, इंटरनल जर्नी हो गया. So that is there. I want to say thanks to Karina behind the camera. I want to say thanks to Maninder also behind the camera. Behind the camera, and who is not watching us, I would like to inform that now we are available on Spotify and also on Ghana. You can listen to us on there also. Please subscribe to our channel. Thank you so much. See you somewhere in my stories. Bye. Bye.